everyone and welcome to Competitive Aim. As you know, in this series we are going to attempt next 25 question in organization behavior. Let us begin with our first question. The fundamentals of organizational behavior is or are option number A, caused behavior, option number B, a whole person, option number C, individual differences, or option number D, all of the above. So the correct answer is all of the above because A, B, C all are fundamentals of organizational behavior. Now next question number 177. The principles of organization theory is option number A, principle of coordination, option number B, principle of specialization, option number C, principle of objectivity, and option number D, all of the above. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में तीनों ही प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन और ऑब्जेक्टिव. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 178. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कंसिस्ट ऑप्शन नंबर ए, नॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्व बिहेवियरल रेगुलरिटीज, ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेंट वैल्यूज, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव, that is norms, observe behavioral regularities and dominant values. Now the next question is question number 179. Which is the element of bureaucracy? Option number A, procedure, option number B, hierarchy of authority, option number C, division of work, or option number D, all of the above. So all the three options are the elements of bureaucracy, therefore the correct option will be option number D, all of the above. Now moving to our next question number 180. Which statement is true? Option number A, goal serves as the starting point for organizing organizational activity. Option number B, organizational behavior is concerned with the study of behaviors and attitudes of men in an organizational setting. Option number C, organizational behavior can be regarded as a systematic attempt to understand the behavior of people in organizations of which they are an integral part, or option number D, all of the above. So here all these statements are true, therefore the correct answer will be option number D, all of the above. Now moving to our next question 181. Dash commitment refers to an employee's obligation to remain with an organization for moral and ethical reasons. Option number A, affective, option number B, continuance, option number C, theoretical, or option number D, normative. So here the correct option will be option number D, normative. Now moving to our next question, that is question number 182. People with positive dash believe in their inner worth and basic competencies. Option number A, locus of control, option number B, self monitoring behavior, option number C, core self evaluations, and option number D, levels of enrichment. So here the correct option is option number C, core self evaluations. Now the next question number 183. Dash is the learning concept of reinforcing closer and closer approximations to the desired new behavior. Option number A, modeling, option number B, shaping, option number C, classical conditioning, or option number D, social learning. So the correct answer here is option number B, shaping. Shaping is the learning concept. Now next question number 184. Eliminating any reinforcement that is maintaining an unwanted behavior is called. Option number A, extinction, option number B, punishment, option number C, negative reinforcement, or option number D, positive reinforcement. So the correct answer here is option number 1, extinction. ठीक है, एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमको मिला है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जो भी हमने काम किया है उसका अगर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट हमको मिलता है तो उन चीज़ों को हम वहाँ पे अवॉइड करते हुए या छोड़ते हुए चलते हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185.
Dash is the process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Option number A, interpretation. Option number B, environmental analysis. Option number C, perception. Or option number D, personality. So the correct option here is option number C, perception. Now moving to our next question, 186. Decision makers operate within the confines of dash, that is, they construct simplified models that extract the essential features from problems without capturing all their complexity. Option number A, optimal decision making. Option number B, intuitive decision making. Option number C, bounded rationality. Or option number D, synopsis. So here the correct option is option number C, bounded rationality. Now moving to our next question, question number 187. Which of the following is not an organizational constraint on decision making? Option number A, performance evaluation. Option number B, reward system. Option number C, personality. Or option number D, formal regulations. So the correct answer here is option number C, personality. Now moving to our next question, question number 188. Which of the following is not a key element in motivation? Option number A, environment. B, intensity. C, direction. Or D, persistence. So the correct answer here is A, environment. Now the next question is 189. Individuals with a high need to achieve prefer all the following except dash. Option number A, job situations with personal responsibility. Option number B, a high degree of risk. Option number C, overcoming obstacles. Or option number D, feedback. ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल के पास हाई नीड टू अचीव होगा उसका प्रेफरेंस ए सी डी तीनों ही होंगे लेकिन बी नहीं होगा. देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190. डैश एग्जिस्ट when an individual perceives that the ratio of their input to outcomes is dissimilar to the ratio of relevant other. Option number A, reinforcement. Option number B, cognitive dissonance. Option number C, equity tension. Or option number D, turnover. So here the correct answer is option number C, equity tension. Now moving to our next question, question number 191. 6 universal dash are anger, fear, sadness, happiness, disgust and surprise. Option number A, cognition. Option number B, loops. Option number C, emotions. Or option number D, moods. So the correct answer here is option number C, emotions. तो ये सारे क्या है, हमारे emotions हैं. Next, question number 192. The dash model is effective at describing decision making within temporary groups, particularly those with deadlines. Option number A, punctuated equilibrium. Option number B, authority structure. Option number C, formal regulation. Or option number D, performance evaluation. So the correct answer here is option number A, punctuated equilibrium. Now moving to our next question, question number 193. Dash refers to the attitudes and behaviors that are consistent with a role. Option number A, role perception. Option number B, role identity. Option number C, role exceptions. And option number D, role conflict. So the correct answer is option number B, role identity. क्योंकि रोल आइडेंटिटी में ही रोल परसेप्शन और रोल एक्सपेक्टेशंस दोनों ही आ जाते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 194. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड ग्रुप परफॉर्मेंस? ऑप्शन नंबर ए, द लार्जर द ग्रुप द ग्रेटर द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी. ऑप्शन नंबर बी, increases in group size are inversely related to individual performance. Option number C, total productivity tends to decline in large group. Or option number D, group size is not a determinant of individual productivity. So the correct answer here is option number B, increases in group size are inversely related to individual
परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप का साइज़ हम बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस यहाँ पे कम होते जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है साइज़ और ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप का साइज़ बड़ा करते जाएंगे हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर या हर एक इंडिविजुअल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द करेंट पॉपुलैरिटी ऑफ टीम? ऑप्शन नंबर ए, टीम outperform individuals when the task require multiple skills. Option number B, teams enable organization to better utilize employee talent. Option number C, team are a means to increase employee motivation. And option number D, teams outperform individual in all situations. So the correct answer here is option number B, teams enable organization to better utilize employee talent. ठीक है, क्योंकि हम टीम कब बनाते हैं, टीम में हम अलग अलग स्किल अलग अलग स्पेशलाइजेशन के इंडिविजुअल्स को हम रखते हैं और हर एक इंडिविजुअल के टैलेंट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वर्क टीम which results in a level of performance that is greater than the sum of individual inputs. Option number A, synergy. Option number B, enthusiasm. Option number C, energy. और option number D, initiative. So the correct answer here is option number A, synergy. ठीक है, तो synergy में क्या था, एक कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ा था, 1 + 1 = 2, that is not synergy, that is individual input output, and 1 + 1 is 11, this is called synergy. इसका मतलब कि दो लोग अगर एक साथ काम करते हैं तो उसका आउटकम जो है दोनों के इंडिविजुअल आउटकम को ऐड करने से ज़्यादा आएगा, जिसको हम synergy बोलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, हर्से एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी डिफर्स फ्रॉम अदर लीडरशिप थ्योरीज मोस्ट क्लियरली बिकॉज इट डैश. ऑप्शन नंबर ए, identifies specific leadership style. Option number B, focus on the followers. Option number C, makes leadership contingent on the situation. And option number D, uses the leadership dimensions of task and relationship behavior. So the correct answer here is option number B, focuses on the followers. Now moving to our next question, question number 198, a dash leadership style identified by House in path goal theory leads to greater satisfaction when tasks are ambiguous or stressful than when they are highly structured and well laid out. Option number A, directive. Option number B, supportive. Option number C, participative. Or option number D, achievement oriented. So the correct answer here is option number A, directive. Now moving toward next question, question number 199, which of the following is not true of charismatic leaders? Option number A, they have a vision. Option number B, they have behavior that is unconventional. Option number C, they are willing to take high personal risk. Or option number D, they are focused on their personal needs. So the correct option here is option number D, that is दे आर फोकस्ड ऑन देयर पर्सनल नीड. ठीक है, तो कैरिस्मेटिक लीडर्स कभी भी अपने पर्सनल नीड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की नीड्स को समझते हैं, इसीलिए दूसरे लोग ऐसे लीडर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट डैश. ऑप्शन नंबर ए, कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेट्स अ malfunctioning within the group. Option number C, is good for a group. Or option number D, improves productivity. So the correct answer here is option number B, indicates a malfunctioning within a group. Now ये एक बोनस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201. तो ये हमारे इस सीरीज़ का 26th क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज द डैश
is characterized by highly routine operating tasks achieved through specialization. Option number A, matrix organization. Option number B, bureaucracy. Option number C, simple structure. Or option number D, team structure. So the correct answer here is option number B, bureaucracy. So this was all for today's class. All the best for your exams. अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना, सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको क्लियरली समझना, और अगर इन केस आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो थ्योरी पार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करना, उसके बेसिस पे आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं. ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.